and we had to find out whether it was a leap year or not. Yes. So Yeah. I have tried doing that a lot and have successfully built that as well. But I'm not somehow I've taken some reference from Google. But Okay. in that there was some function MOD which was required. I know how to Okay. make that, but I'm not able to understand the logic that was there inside the MOD. So if you could just do help Okay. us with that, I can share my screen and show it to you if you want. Yeah. Fine. Are you sharing your screen? Yes, sir, I'm sharing. Okay. I don't see it yet. Can you reshare? Oh, I think he got disconnected. Fine. Really sorry, sir. Actually, my this I had to Yeah, I give saw some. you got disconnected. No worries. Mm. Okay, we can see your screen. Okay. Okay. Not here. Custom date is okay. Custom date is just a date field you have created, right? Right. Uh, my question is, this is ending here. This is ending here. Okay, I did this formula. Can you hear me? Yes, sir. I'm Yeah. saying, shall I write it down in your chat? No, 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 no. Just edit on that formula. So let's. Okay. You don't need that much. Edit the formula, and instead, Uh, just do one thing. right. Right. So, what is your formula return type? Uh, select on the drop down. Let's go through this step by step. थोड़ा ऊपर scroll करो. Right. नहीं जो formula return type जो है drop down. उसके लिए तो sir, okay, return type. Okay, checkbox because it was returning a boolean, so that's why I had selected this. Right. Exactly. No, just click on that. I want everyone else also to see. So example से हम सबको share कराएंगे. Okay. The solution. I expand on that. I've expanded, sir. Can you see? Okay. I think it's stuck. Open नहीं हो रहा है. Can you see Yeah. now? Click on that. What return type should I select?
Yeah, so drop down, I'm not sure. Is everyone else able to see? Is my net not working or? No, it's not using. Yeah, it's not expanding. We're not able to see. Anyways, no worries. So, in this case, what happens is, see, अब हमारा जो formula है, right? Whenever we are creating a formula, when you guys must have created it, so the thing is, formula के end में कुछ तो हमारा end result होगा, right? जो हमको store करना है. So, जैसे हमारा normal field बनाते वक्त हमको एक data type देना पड़ता है. Similarly, जब आप formula field बना रहे हैं, तो उसका end value actually क्या होगा? What is the supposed expected value? उसके basis पे ही आपको फॉर्मूला का रिटर्न टाइप देना है. दिस इज इक्विवेलेंट टू जैसे आप फील्ड का डेटा टाइप दे रहे हैं. तो यहाँ पे इट बिकम्स लाइक फॉर्मूला, और फॉर्मूला के अंदर भी आप दीजिए क्या वो टेक्स्ट टाइप का है, क्या वो बुलियन है, चेकबॉक्स है, राइट, क्या नंबर है, राइट. सो ऑल दोस कंडीशंस यहाँ भी एप्लीकेबल है, व्हिच इज व्हाई वी नीड समथिंग व्हिच इज कॉल्ड द फॉर्मूला रिटर्न टाइप. नाउ लेट्स गो टू द एक्चुअल फॉर्मूला जो यहाँ पे लीप ईयर के लिए लिखा है. Now all of you should be already know कि actual leap year का consideration is two things. या तो जो नंबर है इट इज अ डिविडेंट ऑफ 400, राइट, और इट इज अ डिविडेंट ऑफ 4 बट इट इज नॉट अ डिविडेंट ऑफ 100. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स 2024 इज अ लीप ईयर, राइट. 2023 इज नॉट लीप ईयर, 2022 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, देन अगेन 2020 इज अ लीप ईयर, राइट. सो ऑन एंड सो फोर्थ हम देखते जाते हैं. तो फॉर दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन? आप कैसे चेक करते हैं कि कोई किसी नंबर का डिविडेंड है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई यू यूज दिस मेथड व्हिच इज कॉल्ड मॉड. मॉड इज द मॉड्यूलस फंक्शन जो हमारा होता है कि वो रिमाइंडर निकाल के देता है हमको, जो हम कोडिंग में ऑड इवन निकालने के लिए रिमाइंडर के लिए डिवाइड करते हैं. सो दिस इज जस्ट, दिस मॉड जस्ट गिव्स यू अ रिमाइंडर. अब यहाँ पे अगर हम ये कंडीशंस देखें तो यू विल सी इट इज ब्रोकन डाउन इनटू फ्यू थिंग्स. ऑपरेशन जो है, okay, this if you can remove this if actually, okay, Okay. Udit, you remove that if from top, and नीचे वहां पे जहाँ पे तुमने वो कॉमा दिया है, वो कॉमा से लेकर लास्ट के ब्रैकेट तक यू कैन ऑल्सो रिमूव. The क्योंकि true कोई and भी false, एक no? हाँ, वो कॉमा ट्रू एंड फॉल्स वो पूरा हटा दो नीचे से, एंड ऊपर इफ Right. को भी हटा दो, ओपनिंग ब्रैकेट भी हटा दो उसका, राइट. तो Okay. खाली और का एक Okay. ब्रैकेट रहेगा. व्हाई? व्हाट Okay. हैपेंस इज, सी, बाय इटसेल्फ दिस इज अ कंडीशन. तो कंडीशन के एंड में वैसे भी ट्रू या फॉल्स ही आएगा. ओके, Okay. तो जो Okay. तुम्हारा फॉर्मूला हो जा रहा है इट बिकम्स लाइक इफ ट्रू ट्रू एल्स फॉल्स, राइट, या इफ फॉल्स फॉल्स. तो बाय द फिर ट्रू और फॉल्स यहीं से निकल जाएगा. सो वी डोंट नीड दैट आइडियली. दिस इज हाउ यू रिड्यूस द फॉर्मूलाज. नाउ हाउ डज मॉड वर्क? अब हमको दो कंडीशंस चेक करनी है कि अगर हमारा या तो 400 का डिविडेंड है या फिर 4 का डिविडेंड है एंड 100 का डिविडेंड नहीं है, राइट. सो फॉर दिस इफ यू सी हियर, पहला जो कंडीशन है वो हमने और के अंदर किया है. व्हाट इज अवर और? देयर आर द लॉजिकल ऑपरेशंस व्हिच वी हैव व्हिच इज एंड और तीसरा है नॉट, राइट. एंड हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी वांट टू मेक श्योर दैट एवरी कंडीशन इज ट्रू, राइट. ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो दो तीन कंडीशन हमने डाली है, तो यू सी हियर जब थर्ड लाइन में हमने एंड दिया है, एंड के अंदर अगेन वी हैव रिटन टू कंडीशंस. वन इज कि जो भी हमारा ईयर है उसका मॉड बाय 4 इज 0, मतलब वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए. लेकिन दूसरा कंडीशन भी वांट कि वो भी ट्रू हो, कि 100 से डिवाइड ना हो, राइट. सो द सिनेरियो हियर इज यू वांट एवरी कंडीशन टू बी ट्रू, खाली तभी यू विल कंसिडर इट ओके दिस इज अ सक्सेस. देन वी विल यूज एंड, व्हिच इज व्हाई इन द सेकंड पार्ट वी आर यूजिंग एंड. अब ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा क्या था? या तो ये 4 से डिवाइड वाला कंडीशन ट्रू हो जाए, एल्स एक और है हमारा कि 400 से डिवाइड हो जाए, राइट. राइट सर, तो बिकॉज अब ये इसमें कोई दोनों, फर्क तो नहीं पड़ता ना. बिकॉज अगर इस एंड ऑपरेटर के अंदर कोई भी रिजल्ट हो, चाहे वो ट्रू हो या चाहे फॉल्स हो, वो एट द एंड तो और के साथ ही लगना है, तो वो उसका रिजल्ट सेट तो इसी पे डिपेंड कर नहीं, नो, सकता है. I'll tell you what will happen. See, let's take, अगर मैं कोई साल लेता हूँ, let's say 2025, let's take 2025, right. अब 2025 में मेरा क्या हो जा रहा है?
कि अंदर वाला जो है वो 4 से डिवाइड वाला भी फॉल्स हो रहा है, राइट? Right. 100 से नहीं डिवाइड होने वाला इज ट्रू, राइट? सो इट इज फॉल्स एंड ट्रू, सो इट नाउ बिकम्स व्हाट? False. यस। एंड अब ऊपर वाला जो मेरा कंडीशन है विच इज इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 400, राइट? सो देन Right. एक फॉल्स है, दूसरा इसका एंड से फॉल्स आया, उससे भी फॉल्स से आया, विच इज वाई नाउ इट इज फॉल्स कि 2025 इज नॉट अ लीप ईयर। अगर मेरा अंदर वाला मेरा और होता तो मेरा क्या होता कि 4 से डिवाइड हुआ नहीं 2025, तो पहला कंडीशन इज फॉल्स। लेकिन दूसरा कंडीशन जो है वो रहता ट्रू, राइट? तो अब ये मेरा ट्रू हो जाता, और बाहर वाला क्या है 400 से डिवाइड नहीं है, तो वो फॉल्स होता। तो फिर और Okay. अगर होता अंदर मेरा, तो देन इट वुड बी लाइक 2025 भी लीप ईयर हो जाता, Right. राइट? Right. तो ये जो हमारा लॉजिक है, दैट इज व्हाई वी यूज इट लाइक दिस। ओके, अब It is. एंड के अंदर, और एंड के अंदर क्यों है, मॉड का फंक्शन क्या है, इज एवरीवन क्लियर? राइट? ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, we see there is a syntax. Why is there a syntax error? कहाँ पे syntax error है? क्या ये कर्ली ब्रेस है क्या लास्ट वाला? लास्ट वाला Yes, sir. कर्ली ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है? सर मैंने गलती से लगा दी था, करली था वो। हाँ, चलो चेक करो। कंप्लीट राइट, है। डन हो गया सेव सर, दिस। इसको सेव कर देता हूँ। हाँ, फॉर्मूला इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट सर। फाइन। So shall I stop sharing? Yeah, you can stop sharing. I'll share my screen now. Right. Let me know once my screen is visible. हेलो। Yes. हाँ सर, कुछ नेटवर्क इश्यू से मैं लेट ज्वाइन हो गया, तो एक बार Okay. फिर से आप रिपीट करेंगे? Yeah. So no worries. वो उनका जो फॉर्मूला फील्ड का जो डाउट था वही हम कवर कर रहे थे, बट डोंट वरी, I'll anyway be creating fields now, so we'll go through the same thing. Okay. ओके। Fine. Now, अब other than that, standard object क्या है, basic field types क्या है, everyone is clear on what those things are? Yes. Everyone else, I'm just hearing 2-3 people answer. Okay. See, if you don't have a query, I will assume you have understood everything. But if you have a query, I'll ask you, please ask questions before I progress. नहीं तो ये doubt बढ़ता जाएगा. Okay, of all the people here, कल जो exercise दिया था, किस किसने try नहीं किया? Who all did not get a chance to try it? सर वो रिलेशनशिप्स वाला जो था, लुकअप, हायरार्की और मास्टर डिटेल, वो तो नहीं करना था ना, सिंस वी हैव नॉट रीच्ड दैट पॉइंट अभी। No, I'm not asking about that. Only the part I have asked you guys to do, who all did not do. Okay, so everyone has done that and no one has any doubts. अगर doubt नहीं है, so please confirm कि yes sir, we don't have any doubts. हेलो। Yes.
सर मैंने कल का असाइनमेंट ट्राई किया था पर कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो इसलिए। हाँ, तो that is what I am asking from the last 10 minutes कि if anyone has any doubts please ask। आप पूछिए, 10 मिनट से मैं वही पूछ रहा हूँ। जी सर। हाँ, तो डाउट क्या था, कहाँ पे अटके आप? सर पहले तो डेटा टाइप कौन सा लेना है उसमें कंफ्यूज हो रहा था। नहीं, डेटा टाइप तो मैंने एक्सरसाइज में आपको दिया था ऑलरेडी सारा। हाँ जी सर। तो फिर क्या हुआ, डाउट कहाँ पे आया फिर? सर लिप ईयर है या नहीं, इसी में डाउट था। मतलब कैसे उसको कैलकुलेट करें, फॉर्मूला कैसा बनाए। फाइन, ठीक है, I'll share the solution for that leap year in chat। आप ट्राई कर लेंगे, ओके, राइट। सो अदर देन दैट सर एक आई थिंक, एक चीज और चीज है सर, मेरी मेरे को पूछनी थी। यस, सर जैसे हमारे ऑलरेडी अकाउंट्स के अंदर बहुत सारा रिकॉर्ड्स पड़ा हुआ था, जैसे हमने देखा भी था, तो उसके ऊपर हमने एक और कस्टम फील्ड लगा के उसको सिंक्रनाइज, मतलब वो उसमें ऑटो नंबर वाला फील्ड लगाना था। तो उसमें हमें राइट देखना था कि वो प्री एग्जिस्टिंग वाला ऑलरेडी रहे। तो मेरे साथ क्या हो रहा राइट। था कि मैंने बनाया, वो सब कुछ करा, वो सब कुछ फाइन तरीके से हो गया, लेकिन जब मैं लगाने के बाद अकाउंट्स में जाके एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ओपन करता हूँ तो मुझे वो वाला फील्ड नहीं दिखता, ऑटो नंबर वाला। बट अगर मैं उसी रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ, एडिट के बटन पे दबाता हूँ, जो राइट हैंड साइड में ऑप्शंस देते हैं, एडिट और डिलीट और हाँ, समथिंग, उसमें उस करता हूँ तो रिकॉर्ड का उसमें अभी दिखता है आपको सर। अभी ओपन करके वो नहीं दिख रहा अभी भी फील्ड? नहीं सर। ओके, देन द ओनली इशू इज जो फील्ड बनाते वक्त जो लास्ट वाला स्क्रीन था जहाँ पे वो लेआउट में ऐड करना होता है, यू मस्ट हैव अनसिलेक्टेड समथिंग देयर, या बाय नो डिफॉल्ट सर, इट इज अनसिलेक्टेड हो सिलेक्टेड। गया है? नहीं सर, मैंने लेआउट ऑल में भी, पेज पेज लेआउट्स लेआउट बी में भी देखा। सिलेक्टेड। यस सर, मैं कैन आई शो? ओके, ओके, या प्लीज शेयर योर स्क्रीन, आई विल स्टॉप शेयरिंग। कैन सी यू सी बिकॉज सर? देखो, यस, ये सब चीजें जो है दीज आर द फंडामेंटल पार्ट्स। अगर आपकी ये चीज क्लियर नहीं होंगे, आप बात के पार्ट आप अटक जाएंगे। I know there are a lot of people who are just starting these things who maybe are not from an IT background, which is why I am giving this extra time for buffer time for this topic. सर ये वाला फील्ड था, Right. ये मैंने बनाया सर, इसका सब कुछ Okay. दिया, एडिट करके Go to सर the ये फील्ड। record. ओके ओके। जैसे मैंने सर अपने नाम का रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे, Right. नाउ इट इज शोइंग सर, प्रीवियसली इट वाज नॉट शोइंग। This same thing happened with me in class yesterday only, right? मैंने बोला ना कि sometimes the cache does not load. वो पेज लेआउट पुराना वाला लेआउट ही अटक जाता है। तो मैंने ना दोपहर को करा था, उसके एक डेढ़ घंटे Yeah, बाद चेक करा, तब भी नहीं आ रहा था। this thing is something which happens with LWC or the lightning experience sometimes, okay? And ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो चलो स्टैंडर्ड पेज लेआउट है। जब LWC बनाओगे तुम कोड मॉडिफाई कर चुके हो लेकिन वो पुराना कोड ही दिखाया जा रहा है, so that also happens। So these things happens, so the solution is normally browser cache आप क्लियर करके हार्ड रिफ्रेश करें तो it normally updates, but बट उस टाइम sometimes पे that सर, also does not work। यहाँ से अगर सर मैं इसको एडिट कर रहा था ना, तो यहाँ पे जरूर हाँ दिख रहा था ये ऐसे। हाँ, दिस इज जस्ट फॉर्म, राइट? यहाँ पे सारी फील्ड दिखेगी। बट उसमें ऐसे ओपन करके देखता रहा तो नहीं दिख रहा था। डिटेल पेज पे नहीं दिया, सो दैट इज अ कैशे इशू दैट हैपेंस अ लॉट। ओके, ओके सर। फाइन, ओके, देन आई अज्यूम बाकी सबको कोई प्रॉब्लम है नहीं, सबको पूरा क्लियर हो चुका है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, एटलीस्ट द पार्ट्स जो हमने कवर किए हैं। सो आई विल नाउ मूव टू कस्टम ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ कस्टम ऑब्जेक्ट, व्हाट एग्जांपल यू गाइस वांट टू फॉलो? स्टूडेंट का एग्जांपल फॉलो करना है, एम्प्लॉय का एग्जांपल फॉलो करना एम्प्लॉय। है? एम्प्लॉय, फाइन, ओके।
सो नाउ आई विल गो थ्रू द स्टेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने के क्या क्या प्रोसेसेस है। फील्ड बनाने के तो हमने देखे, बट ऑब्जेक्ट बनाने के भी देखते हैं। सो यू गो टू ऑब्जेक्ट मैनेजर, क्रिएट and create a custom object. Right. There is also an option for custom object from spreadsheets, but normally that is not used a lot. आपको object schema कहीं पे spreadsheets में लोग maintain नहीं करते, मिलता नहीं है. It's a lot of hassle. Okay, which is why normally just directly लोग object create करते हैं. अब जब आप object बना रहे हैं, you have to think of a lot of things. Okay. Basic part जो है employee. Okay. Object name automatically, this is the API name, which automatically got, which is employee. Right. Next is a plural label. ये plural label is used in some of scenario cases जब लगता है, कोड में भी यूज होता है, right? Which is why always define a plural label which makes sense. Okay, ताकि logically आप इसको ध्यान ला सके, आप यूज कर सके. Now अब employee label हुआ ये, right? Plural label is just employees. API name I have just kept same as it is. The next type is, अब आपको जो record का name का label क्या होगा? What do they mean by record name? Okay, let's go to a lead. ये lead में आपको एक name का field दिख रहा है, right? Similarly, let's go to account. Account का primary field क्या है? Account का name, right? Let's go to a case. Case का I don't think यहाँ पे record होगा, but for case, okay, there are few. For case you see it is not a name, it is a number, right? तो आपका प्राइमरी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो रिकॉर्ड का आइडेंटिफिकेशन है, उसको आप क्या रखना चाहते हैं? उसको आप नाम रखना चाहते हैं या नंबर रखना चाहते हैं? नाउ फॉर एम्प्लॉय, व्हाट इज द वन व्हिच वी शुड बी हैविंग? नंबर, एम्प्लॉय नंबर. Number. शुड वी हैव एम्प्लॉय नंबर? थिंक ऑफ इट दिस वे, जब मेरे को एक लिस्ट व्यू में अचानक से नाम देखना है, यहीं पे मेरे को एम्प्लॉय का नाम दिखेगा, इज इट बेटर, या फिर एक आईडी दिखे, फिर उस पर क्लिक करो, फिर अंदर जाके एम्प्लॉय का नाम दिखे? ये वहीं पे नाम दिखना चाहिए. राइट. आपका जब आपके आईडी कार्ड में आपका नाम तो लिखा होता है, राइट? एक बैकएंड आईडी भी रहता है, बट नाम इज योर प्राइमरी की, दिस इज द एम्प्लॉय, ये राइट? नाम से ही सब चीज आइडेंटिफाई होनी चाहिए. Name should be the one which you should be using. Number for some scenarios it is useful. अब you will say, someone will say कि हम एम्प्लॉय का आईडी भी तो प्राइमरी रहेगा, रहेगा प्राइमरी, क्यों नहीं रहेगा? बट इज इट इजियर? यू हैव टू थिंक ऑफ, इज इट इंट्यूटिव, राइट? कि क्या वो लिस्ट में से आईडी देख के ही आदमी पहचान जाएगा मैं किसे ढूंढ रहा हूँ, या फिर नाम दिखना इज बेटर? ओके, Name is better. हाँ. द अनदर रीजन इसको हम क्यों नाम रखेंगे, लेट्स गो टू, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज, राइट? तो अगर मेरा जो कॉन्टैक्ट है या अकाउंट है, अकाउंट का प्राइमरी मेरा क्या था? अकाउंट नेम. विच मीन्स अगर मैं कहीं पे रिलेशनशिप बनाता हूं यहाँ पे, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे दिखेगी? अकाउंट का नेम दिखेगा. अगर ये अकाउंट नंबर होता तो देन यहाँ पे खाली दिखता कि दिस केस, यहाँ पे दिखता लेट्स से AC1111, राइट? तो क्या तुम यहां से तुमको पता चल जाता ये कौन सा अकाउंट है? नो, राइट? यू विल हैव टू गो, फिर जाके देखो, अच्छा इस अकाउंट का ये नाम है. ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप. सी, रिकॉर्ड का जो भी नाम रखेंगे वही आपका पेज लेआउट पे, लिस्ट पे, रिलेशनशिप में, सर्च में, सब जगह इट कम्स बेटर. So for employee it is better if we keep it as name, but we have the option कि we can keep it a number also. Okay, for now we'll keep it as name for employee. Now these are few configurations you have to remember. जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसका यूज केस कहाँ पे होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फर्स्ट इज द अलाउ रिपोर्ट्स. आइडियली अनलेस बहुत ही सिक्योर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर मोस्ट ऑब्जेक्ट्स आप अलाउ रिपोर्ट बनाएंगे. इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे. व्हाई? इसका मतलब है बेसिकली, इफ यू गो हियर इन Salesforce, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिपोर्ट.
अब आप रिपोर्ट में जाके किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा एक स्नैपशॉट निकाल सकते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स गो टू होम. ओके, सो यू सी दिस, right? What is this? This is just nothing but a report. कि show me a list of all the reports and कौन से स्टेटस में है, राइट? ऐसी 12 अकाउंट है नो एक्टिविटी स्टेटस में, 0 यहाँ पे है, राइट? 0 यहाँ पे है. सो व्हाट इज दिस? आप रिपोर्ट बनाते हैं. तो नॉर्मली जब आप ऑर्ग में डेटा रखेंगे तो किसी को तो वो डेटा का रिपोर्ट चाहिए होता है, राइट? कि इस हफ्ते में कितना अकाउंट क्रिएट हुआ, कितना सेल हुआ. फॉर एन एम्प्लॉय जब आप रिपोर्ट बनाएंगे किसी डिपार्टमेंट वाइज आपको कितना एम्प्लॉयज है, ये सब डेटा आपको निकालना पड़ेगा. सो फॉर दैट always select, mostly we'll select allow reports, right? The next thing is something which is called activities. What do they mean by activities? Let's go to a account. Okay, now for any object आपको दिखेगा साइड में there is this one tab of activity. इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप इस रिकॉर्ड के रिलेटेड एक आप टास्क बना सकते हैं, कोई एक कैलेंडर का एक इवेंट बना सकते हैं कि इस अकाउंट के अगेंस्ट लेट्स से आई क्रिएट अ न्यू इवेंट कि नेक्स्ट मंथ तक मेरे को इसके साथ बात करनी है या मीटअप करना है कहीं पे जाके. आई विल क्रिएट एन इवेंट, राइट? देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड लॉग कॉल कि मेरी इससे इस तारीख को बात हुई, क्या क्या बातचीत हुई, मेरे को ये डेटाबेस में लिखना है. आप लोगों को जब कोई कस्टमर केयर से या कोई जो अकाउंट के जो सेल्स के लोग फोन करते हैं, राइट? People call you, right? Do you want this? And you say, okay, I want this policy or something and all. I'm interested in that. So what do? To them, उनके लिए आप एक अकाउंट है. तो जब उसके आपके साथ बात होगी वो यहाँ पे लिखेगा कि मेरे इसके साथ बात हुई, ये कमेंट्स हुआ, एंड देन ही विल ऐड अ टास्क कि अच्छा उसने मेरे को बोला है कि कल मेरे से बात कीजिए, अभी मैं ऑफिस में हूँ. सो ही विल ऐड अ टास्क टू कॉल हिम अगेन टुमारो. ओके, आपने उसको बोला ठीक है एक काम कीजिए, आपके ऑफर का पूरा डिटेल्स मेरे को भेज दीजिए. सो ही विल सेंड यू एन ईमेल. ये चीजें आप रियल लाइफ में देखते हैं कि नहीं? यस. यस. राइट? ये सब ये जो ऑनलाइन जो ऐप्स है, पॉलिसी बाजार हो गया, ये सब इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, दीज पीपल डू दी सेम थिंग्स, राइट? द एजेंट्स डू दी सेम थिंग्स. व्हाट आर दे डूइंग? वो किसी कस्टमर से बात ही कर रहे हैं या पोटेंशियल कस्टमर से बात कर रहे हैं, राइट? सो ऑल दिस जो इंटरेक्शन का एक्टिविटीज है, आप इसके साथ कम्युनिकेशन का एक्टिविटीज है, यू नीड टू कीप सम ट्रैक. तो क्या आपके लिए एप्लीकेबल है? फॉर दैट यू नीड टू सिलेक्ट दिस अलाउ एक्टिविटीज. ओके, लेट्स अलाउ दिस आल्सो फॉर आवर एम्प्लॉय. हम इसके लिए यूज करके देखेंगे क्या क्या हम ट्रैक कर सकते हैं. नाउ दिस थर्ड वन इज समथिंग should always be activated on object. Why it should be activated on an object, I'll show you. Right, let's go to, I think for case it is enabled here. Let's go to case details. Okay, it is enabled here. Fine. तो ये जो केस हिस्ट्री का ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, राइट? सिमिलरली जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप बनाएंगे वहां पे आपको उसका भी सेक्शन दिखेगा. इसके अंदर आप क्या करते हैं, लेट्स टेक एन एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चेंज, राइट? तो कब चेंज हुआ, पहले क्या वैल्यू था? एम्प्लॉय का सैलरी चेंज हुआ, कब चेंज हुआ? पुराना अमाउंट क्या था, नया अमाउंट क्या था, राइट? देयर आर सम चीज थिंग्स दैट you need to track कि when were they modified and what were they modified to, yes or no, right? कुछ चीजें हैं जो which are far more important, जैसे किसी का अचानक
नोटिस पीरियड शुरू हुआ तो वो आपका ट्रैक होना चाहिए कहाँ पे, राइट, कि कब ये नोटिस पीरियड में गया, राइट. सो फॉर दैट व्हाट हैपेंस इज, अब सेल्सफोर्स के अंदर जो मैंने आपको बोला था कि ऑल ऑफ दीज आर फील्ड्स, राइट, कि ये सारी फील्ड्स रहेंगी आपके पास. देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ फील्ड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट. ओके. सो बट देयर विल बी सम इंपॉर्टेंट फील्ड आप जिसको ट्रैक करके रखना चाहेंगे कि ये कब चेंज हुआ था, राइट. सो फॉर दैट यू हैव टू एनेबल दिस ट्रैक फील्ड हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, ये चेक बॉक्स. इससे क्या होता है, आपके पास ऑप्शन खुल जाता है बाद में कि आप कुछ फील्ड्स को मॉनिटर कर सकते हैं. यू विल बी एबल टू मॉनिटर अ फ्यू फील्ड्स एंड यू विल बी एबल टू चेक द वैल्यू फॉर दोस फील्ड्स. अब देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन. देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ फील्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट. दैट डज नॉट मीन यू विल बी एबल टू मॉनिटर हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स. At maximum you can only monitor 20 fields in an object. So you have to be very careful. You only select the important fields, not any minor fields. Is that clear? Yes, sir. Everyone, is that clear जो मैंने बोला? Can Yes, you sir. repeat one more time Yes. that important fields वाला वो line? Yeah, okay, fine. Let me do one thing. Let me just finish up this object and then we will demo this. Okay, we'll check with the field कि कैसे monitor हो रहा है. Okay, fine. Sounds good. But I'll elaborate this field history more. It will be easier. Other than that, there are these things which are the object classification. This is more related to how they are available in API. So we will monitor this later. Okay. Deployment status जो है in development deployed. This is more like कि आपका object आप कैसे configure कर रहे हैं, क्या आपका object पूरा बनाना हो चुका है. Ideally you should keep it as in deployment, right? ताकि उसमें आप field सभी add करेंगे, modification करेंगे, maybe object को ही modify करेंगे, right? So this is what is the purpose of this field. Search status. Okay, what is the search status? This just means कि जब यहाँ पे आप search कर रहे हैं, क्या यहाँ पे वो object add होना चाहिए. Okay, अगर आप कोई object बना रहे हैं which is supposed to be end user के लिए front end पे दिखना चाहिए, obviously आप उसको search status को allow करेंगे ताकि इस बाहर से वो search कर सके, नहीं तो नहीं करेंगे. अब object creation के लिए जो ये है, दिस इज समथिंग विच इज ओनली फॉर जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं कि वहां से आप ये टैब बनाएंगे कि नहीं इसके बाद, राइट. तो वो सब चीजें आर नॉट मोर एप्लीकेबल नाउ. ओके, दोज आर मोर लाइक लाइटनिंग. क्लासिक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था. फॉर लाइटनिंग दीज आर नॉट अवेलेबल, सो दीज आर जस्ट ऑप्शनल. यू कैन लीव दिस. लेट्स जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट. तो हमने क्या बनाया, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना दिया हमने. जैसे ही आप कस्टम फील्ड कुछ बनाते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, so you will see there are a few standard fields जो automatically create हो जाता है. What are the standard fields जो create हो रहा है, मतलब by default create हो रहा है? एक तो हमने जो name हमने configure किया, right? Other than that, the tracking fields of Salesforce. What are the tracking fields of Salesforce? कि for any record, Salesforce needs to maintain 3 crucial data. Okay. What are those 3 crucial data? कि वो किसने बनाया, लास्ट किसने मॉडिफाई किया, और करंटली वो रिकॉर्ड का ओनर कौन है. ओके, सो दिस अकाउंट वाज क्रिएटेड बाय मी ऑन दिस डेट. लास्ट मॉडिफाइड भी इस तारीख को हुआ था बाय मी एंड करंटली ये मेरे नाम पे है. लेट्स से समवन एल्स ओपन्स दिस अकाउंट एंड just let's say changes the priority to low, right? So ये हमारे पास ट्रैक होना चाहिए कि लास्ट ये रिकॉर्ड पे
किसके हाथ में ये था रिकॉर्ड, किसने चेंजेस किया इस रिकॉर्ड पे, दिस इज व्हाट यू नीड टू ट्रैक। ओके, नाउ ओनर कौन है, कि अभी ये रिकॉर्ड किसके नाम पे है, किसको असाइंड है ये रिकॉर्ड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिकॉर्ड, सो दैट इज व्हाट द ओनर इज। तो ये हमारा तीन डिफॉल्ट हो जाता है। नाउ लेट्स गो थ्रू दैट सिनेरियो कि व्हाई फील्ड हिस्ट्री विल बी इंपॉर्टेंट। सी, अभी अगर मैं रिकॉर्ड खोलता हूँ, व्हाट यू कैन सी, ये रिकॉर्ड 14/5/2025 को बना था, एंड आज रात को 10/17 पे ये रिकॉर्ड मॉडिफाई किया मैंने। बट मैं अगर आपसे पूछूं क्या मॉडिफाई किया, कैन यू टेल मी, एनीवन? प्रायोरिटी को करा वो। अरे, अभी अगर किसी ने लॉग इन करके तब ना देखा हो, तो आप अभी बता सकते हैं कि क्या मॉडिफाई किया था मैंने? नहीं। नहीं सर। राइट। सो अब चलो, प्रायोरिटी मैंने मॉडिफाई किया, उससे कुछ इंपैक्ट है ही नहीं, नो इश्यूज। बट अगर मैंने ये रेवेन्यू मॉडिफाई कर दिया, ये तो पता होना चाहिए, राइट? रेवेन्यू तो नहीं ऐसा फील्ड होना चाहिए कि कोई मॉडिफाई कर दे और पता ही ना चले, राइट राइट। और रॉन्ग? राइट। सो लेट्स गो टू अकाउंट। Let's go here, set history tracking, and enable. अब हमको कौन सी फील्ड ट्रैक करनी है? एनुअल रेवेन्यू, राइट? नाउ यू सी हियर व्हाट हैपेंस, यहाँ पे सारी फील्ड्स मेरे को दिख रही है जो अकाउंट पे है, राइट? बट कैन आई सिलेक्ट ऑल? आई कैन नॉट, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। आप यहाँ पे 20 से ज्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकते। उसके अंदर भी देयर इज अनदर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, या तो आप खाली चेंजेस ट्रैक करें, राइट, कि अभी नया वैल्यू क्या हुआ है, यू ओनली कीप कि किसने चेंज किया था ये वाला फील्ड, कि इस तारीख को ये वाला फील्ड चेंज हुआ था। और यू ऑल्सो मेंटेन द वैल्यूज, कि इस तारीख को ये वाला फील्ड चेंज हुआ था, पहले अमाउंट इतना था, बाद में अमाउंट इतना था। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस। Okay, so let's keep this as annual revenue. I have enabled and I have saved. Right. अब मैंने एक फील्ड का ट्रैकिंग मैंने शुरू किया है। लेट्स गो रिफ्रेश दिस पेज। Right. Okay, let me add that first. Right. तो हमारा जैसे केस के हिस्ट्री था, सिमिलरली मैंने जस्ट क्या किया, ये अकाउंट के हिस्ट्री में मैंने ऐड कर दिया। क्या हो गया यहाँ पे? Okay, let me add it to the page layout. I think I just modified on that, right? चलो, add page layout में modified।
Did I modify the correct page? I think मैंने गलत वाला page update किया. नहीं, add कर दो. So you see, just take account history में रहे section add हो गया. But that is the same thing which was happening on case history. Right? This is just a section we need to add. When we will be covering page layout, we will be going into more. What are these things? These are actually called something called related lists. Right? तो ये हम सब जब relationships पढ़ेंगे उसके साथ we will go through more in this. But our purpose of feed tracking is, let me now just remove 1 0, or let me remove everything and just add 100 and save. Right now you will see last modified तो मेरा update हो गया, but if I go to related, it now shows me ये वाला field इस user ने इस time पे ये modification की. Right, so this is what I meant when I said कि crucial fields जब हमको monitor करनी है. Right, so for that is something we need this field history tracking. Okay, कि देखो amount ही इतना change हो गया, people will like अरे ये कैसे हो. So we need to know who did this, but there is a restriction कि आप सारे fields पे नहीं कर सकते हैं. Right, you can only do this for some fields. सर हमने वो फील्ड स्पेसिफिक जैसे ये एनुअल रेवेन्यू वाली सिलेक्ट करी थी, हिस्ट्री एनेबल करी थी इसके लिए, वो कहाँ से उसका नेविगेशन थोड़ा एक बार दोबारा दिखा देंगे प्लीज? हाँ, sure, I'll show you. ऑब्जेक्ट पे आप जब जाते हैं, राइट, जब ऑब्जेक्ट आपने बनाया, राइट, तो ये तो चलो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपके पास मॉडिफाइबल नहीं रहेगा. बट जब आप कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन यू विल सी इट एज अ चेकबॉक्स ऑन द एडिट. फील्ड हिस्ट्री ट्रैक करने का जो था, राइट, जब आप बनाते हैं वहां बन जाएगा. अब एक बार आपने जब इनेबल कर दिया है, नाउ यू जस्ट गो टू फील्ड्स. यहाँ पे ऊपर आपको एक दिखेगा सेट हिस्ट्री ट्रैकिंग. ओके, इसके अंदर जाके यू कैन इजीली सिलेक्ट व्हाट आर द फील्ड्स यू नीड टू ट्रैक. तो अभी यहाँ पे खाली 2 ही फील्ड्स है. ओके, सो वी कैन नॉट ऐड एनीथिंग है. अभी दो फील्ड्स का ट्रैक करके क्या ही करेंगे, राइट? ओके, नाउ फाइन, अब यहाँ तक तो हुआ. नाउ लेट्स, कैन एनीवन ऑफ यू गाइस सजेस्ट अ फ्यू फील्ड्स जो मेरे को एम्प्लॉय पे बनाना चाहिए? सैलरी, एम्प्लॉय, Okay, employee ID. Okay, go with the crucial ones first. Employee ID or डिपार्टमेंट. fine. So what should be Contact the number. डेजिग्नेशन. data type for employee ID? और ऑटो नंबर. Okay. ऑटो नंबर का हम बनाते हैं. Let's keep it as employee ID. What should be the display format? सर अगर 1000 हैं तो हम 5 जीरोस डाल सकते हैं. आप कुछ भी मत डालो. This is not a mandatory field. ओके, आप कुछ भी मत डालो. आप बस बोल दो कि 1 से शुरू होना चाहिए मेरा एम्प्लॉय. That is all. Okay. ओके. So ये जो यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, रेड मीन्स दिस इज मैंडेटरी फील्ड. नॉन रेड मीन्स दिस इज ऑप्शनल. चलो मैं ये भी नहीं डालता, ये भी नहीं डालता. आई लीव दिस टू, राइट, बट रेड वाला यू कैन नॉट लीव, दैट इज मैंडेटरी. चलो एम्प्लॉय आईडी बनाया, 1 से हमारा शुरू होगा. लेट्स मेक इट विजिबल टू ऑलमोस्ट एवरीवन एंड रीड ओनली टू हर, राइट. लेट्स गो टू नेक्स्ट एंड
से एम्प्लॉय आईडी मैंने डाला. What is the next one I should be creating? Mobile number, someone said, right? So उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? फोन. Number. फोन. Not number, phone. उनके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर, right? Save. Next. Save. Right. Now, what did we end up with? ऑब्जेक्ट हमने बनाया एम्प्लॉय. एपीआई नेम क्या बना उसका? एम्प्लॉय अंडरस्कोर सी. उसके अंदर हमने कुछ फील्ड्स भी बनाए. जस्ट 2 फील्ड बनाए फॉर नाउ. वन ऑटो नंबर, वन फोन नंबर. ओके. अब हम जाते हैं ऑब्जेक्ट बना के यूज कैसे करना है. क्या मुझे यहाँ पे कहीं पे एम्प्लॉय अभी दिख रहा है? विद इन द ऐप हमको कहीं पे तो डालना है, राइट? एम्प्लॉय, राइट? सो we need to add that as an object here. Now how do we add that? कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को. ऑप्शन मेरे पास है एक कि आप इधर जाइए, इस पेज में जाइए एंड you add an app here, employee, but you will see that you don't even have that option. Employees का आपको वो ऊपर वाला आइकन ही नहीं मिलेगा, ये टैब ही नहीं मिलेगा आपको. तो इसीलिए जब भी आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर वो आपको फ्रंट एंड पे दिखाना है, you need to create a tab for the same. हर ऑब्जेक्ट के लिए जब तक आप टैब नहीं बनाएंगे, आप यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे. सो फॉर इन आवर केस ये किसके लिए बनेगा? कस्टम ऑब्जेक्ट का एक टैब बनेगा. हाउ डिड आई गो टू दिस? फ्रॉम दिस सेटअप मेनू देयर इज जस्ट दिस टैब. गो टू दिस अंडर कस्टम ऑब्जेक्ट टैब. फॉर विच ऑब्जेक्ट? सी वी ओनली हैव वन कस्टम ऑब्जेक्ट, इसलिए वो यहाँ पे दिख गया, विच इज एम्प्लॉय. अब ये टैब स्टाइल जो है ये एक्चुअली लाइटनिंग में यूज नहीं आता, क्लासिक में यूज आता है. बट नॉर्मली आई ट्राई टू मेक श्योर कि जो भी आइकन है वो थोड़ा मैचिंग टाइप का ही दे, ताकि यू नो इट वर्क्स, looks better. For employee, what is the one we should be using here? Let's use something like, isn't there a person or a user or something? There was a person somewhere here. Books. Presenter है, there's a presenter. People, fine, great. Yeah, and just next. Now again, हर जगह आपका प्रोफाइल से, जैसे हम फील्ड का कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, ये टैब भी किस किस प्रोफाइल को दिखेगा, यहाँ पे ये किस किस प्रोफाइल को दिखेगा, तभी आप ऑब्जेक्ट का एक्सेस कंट्रोल कर पाएंगे. सो फॉर नाउ आई विल कीप इट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन. वी विल कम बैक टू दिस एंड वी विल रिमूव एक्सेस फॉर पीपल. ओके, हम बाद में आके ये एक्सेस भी हटाएंगे लोग. नाउ दिस पार्ट इज वेरी क्रूशियल. ऑब्जेक्ट आपने बनाया, यूआई पे आप दिखा रहे हैं, बट व्हाट आई हैड टोल्ड यू बिफोर कि Salesforce के अंदर एनी फंक्शनैलिटी सेट इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन द ऐप, राइट? ऐप के अंदर हम दिखा रहे हैं. तो अगर मेरा ये जो ऐप है, राइट, आई डोंट वांट इट अवेलेबल एवरीवेयर. मुझे खाली चाहिए कि मेरे सेल्स और सर्विस के ऐप में दिखे. सो दैट इज व्हाट यू कैन कॉन्फ़िगर फ्रॉम हियर.
inside what all apps I want this to be. So for now, what I'll do is I will just add it in the sales apps. Okay, sales के भी there are two versions, which is the standard sales and lightning sales. मतलब एक classic वाला हो गया और एक normal वाला हो गया. I'll just add it in this and save. Now what you will see is कि हमने ऐप में जब ऐड कर दिया है, अब अगर मैं सेल्स ऐप में जाता हूं और बोलता हूं कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड करना है, लेट्स गो टू एडिट, लेट्स गो टू ऐड मोर आइटम एंड लेट्स सी इफ वी हैव एम्प्लॉय हियर. आ गया? राइट, वी एडेड एम्प्लॉय हियर. अब ये मेरे को चाहिए ऊपर. Let me add it as the first tab as employees. It is created now. Record कोई नहीं है अभी तक, but it is created. तो हमने अपना पूरा कस्टम ऑब्जेक्ट बना के अपने ऐप के अंदर एज पर अवर रिक्वायरमेंट ऐड कर दिया, जिसमें हमने फील्ड्स भी बनाया, उसके लिए टैब बनाया, एंड देन वी वर एबल टू डिस्प्ले इट. नाउ हाउ डिड वी कंट्रोल एक्सेस? लेट्स ट्राई टू डू द सेम थिंग इन द सर्विस ऐप. Okay, this is in the developer console, right? We can't do this. Let's go to the some other app. The console app में तो यहाँ से आएगा. But fine. See, now inside this console app, let me add it here. See, so it got added in both my sales apps. Now let's go to the other apps. Let's go to service console. सेल्स के हमने दोनों ऐप में ऐड किया, सेल्स के दोनों ऐप में हमारा एम्प्लॉय ऐड हो चुका है. Will it be available here? Okay, did I create a lightning tab or did I create a normal tab? Hold on. इसका क्या हमने परमिशन सारे प्रोफाइल्स को दिया था? Did I give it to all the profiles? Yes, sir. सारे प्रोफाइल्स को दिया था. No worries. Then let's just add here also for now. We should have restricted the profile also. No worries. Set. So, unfortunately, we ended up adding it for all, but ideally we should have unselected that. ठीक है ना? तो फिर ये यहाँ पे नहीं आता. और लेकिन Right. सर हम तो एक ही प्रोफाइल से लॉगिन है ना? No, see, when the thing is, आपका restriction is cumulative restriction. यहाँ पे एक Salesforce में you have to go with a practice which is Salesforce goes with the least restriction applicable. Okay, there are multiple places जहां से आप restriction को अप्लाई कर सकते हैं. जैसे आप फील्ड लेवल पे कर सकते हैं, आप प्रोफाइल लेवल पे कर सकते हैं, आप ऐप लेवल पे कर सकते हैं, एंड देन यू गो विथ द रोल लेवल पे भी कर सकते हैं. मल्टीपल प्लेसेस है जहां से आपका एक्सेस हो सकता है. अब वो क्या करेगा, लेट से आपने फील्ड एक हाइड किया, प्रोफाइल पे आपने दे दी, सो या रोल पे हाइड किया, प्रोफाइल पे दे दी.
देयर इज समथिंग कॉल्ड परमिशन सेट, कि आपने प्रोफाइल पे भी हाइड किया, लेट्स से परमिशन सेट में दे दिया. नाउ व्हाट इट विल डू इज, अब ही डज नॉट नो कि आप जब एक्सेस कर रहे हैं आप किस ऐप में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. इट विल गो एंड सी इस टैब का एक्सेस क्या इस यूजर को है, आइदर वे, क्या रोल से है या परमिशन सेट से है या प्रोफाइल से है. अगर उसको दिखा कि हाँ इसको एक्सेस है, तो हम इसको ये हर जगह दिखा देंगे. ओके, so that is why when designing you should always go with give the least access possible, ताकि ये सेम चीज ना हो. When we give the profile permission, all the profiles permission, so that means this tab is not supposed to be hidden from anyone, right? So what happens with that? What are the profiles? Let's go to the profiles. ये आपको प्रोफाइल में जाके क्लियर होगा. Right. सर एक चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब ये टैब बना रहे थे तो हमने कहा कि हमें सिर्फ 2 टाइप की एप्लीकेशन में चाहिए, Right. जो कि सर्विस थी और सर्विस कंसोल थी, और आगे हमसे प्रोफाइल पूछी गई तो हमने मोस्टली सभी प्रोफाइल में दे दिया, जिसमें हमारी भी एक Yes. प्रोफाइल थी. Right. So what happens here is, if you see here, right, when we have all of these profiles which are available here, these are the Salesforce का standard profiles. Okay. These are profiles for which there are a lot of things which you cannot modify. Okay. Let's go with the support profile. Now this profile shows custom, but it is actually a Salesforce level profile only, जो out of the box ही बना आता है. Right. अब issue क्या हुआ, ये जो प्रोफाइल है दिस इज फॉर अ सपोर्ट प्रोफाइल. इसके पास एक्सेस कौन से ऐप का है, सर्विस कंसोल ऐप का है. ओके, लेकिन जब हमने इस प्रोफाइल को भी परमिशन दे दिया टैब का, तो उसको तो खाली यही ऐप दिखता है, राइट? तो वो कहां से देखेगा? इट गॉट एडेड डायरेक्टली हियर. सो विच इज व्हाई वी शुड नॉट बी एडिंग द permissions where they are needed. Profile level पे ही we should have hidden that. Only would have been hidden from all the places. Okay. But fine, let's go back to the ones where we intended. जहाँ पे हम इंटेंड कर रहे थे. वन थिंग यू गाइस शुड हैव नोटिस्ड कि जो हमारे नॉर्मल जो एप्स है जहाँ पे हमारे टैब्स आते हैं ऐसे आते हैं, राइट? लेकिन जो हमारे कंसोल वाले एप्स हैं देयर द यूआई इज अ बिट डिफरेंट. ओके, वहां पे टैब्स आर नॉट स्प्रेड अक्रॉस दिस, इंस्टेड टैब्स आर लाइक दिस. ओके, टैब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे रिकॉर्ड्स ओपन होते जाते हैं कंटिन्यूसली. Instead of tabs, this bar is used to store record. तो ये जैसे ये सर्विस क्लाउड का ऐप है, तो there is a reason for this having this way. So these will be when we are going through cases in more detail, then we will go through this whole UI कि why this is like this and why say sales cloud is like completely different. Okay, there is a very specific reason, requirement rather, जिसकी वजह से UI ऐसे डिजाइन है कि कहाँ पे कहीं पे टैब्स ऐसे आ रहे हैं, कहीं पे वैसे आ रहे हैं. ओके, सर Now, आपने ये एम्प्लॉय टैब का परमिशन कौन कौन सी 2 एप्स को दिया था, एक सर्विस को और एक सर्विस कंसोल को? नहीं, मैंने लाइटनिंग वाले एप्स को दिया था और कंसोल एप्स को भी दिया था. सो देयर इज डिफरेंट, देयर इज स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म एक ऐप है और एक आप देखेंगे लाइटनिंग ऐप है. ओके, सो देयर आर मल्टीपल वर्जन्स. तो दिक्कत ये होगी थी कि हमने जिसके अंदर नहीं दिया था परमिशन, जिस ऐप को नहीं दिया था उसके अंदर भी वो टैब आ गया. राइट. ओके, ओके, द थिंग इज वी कैनॉट मॉडिफाई इट. व्हाट वी कैन डू एक्चुअली इज हम ऐप लेवल पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, व्हिच इज नॉट एन इशू, राइट? हम ऐप से ही हटा देंगे. लेट्स सी, बिकॉज ये जो आपको एडिट जो दिख रहा है, राइट, दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, इसमें ऐड किया था हमने सेल्स कंसोल में. यस. Right. So no,
I think service console में क्या था? Did we add in service console? I think we added in service console. Right. Yeah. So this edit you see, right? This is only actually available for the system administrator. जिसके पास ये ऐप को मॉडिफाई करने का परमिशन है, only he is the person who can actually modify this. बाकी नॉर्मल यूजर्स को ये रीड ओनली दिखता है, मतलब व्हाट दे सी इज जस्ट दिस लिस्ट, केसेस, कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट्स, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, नॉट दिस एडिट बटन. ओके, so since as a system administrator we are supposed to be able to design this, इसलिए we get to see everything everywhere and ये edit का modification. Same with sales console, sorry the sales app. ये जो लास्ट में जो हमको एडिट दिख रहा है जहां से हमने ऐड किया, दिस इज नॉट विजिबल टू other users, only administrative users can see this. Okay, now once object तो हमने बना लिया, after that if you see this page is exactly same as what was for opportunities. Now this object for a end user उनके लिए सेम ही है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाना जो प्रोसेस है, अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड बनाने का भी सेम प्रोसेस रहेगा, राइट, अकाउंट बनाने का भी सेम प्रोसेस रहेगा. अब इस पे आइए, न्यू पे क्लिक कीजिए, जो फील्ड से एंटर कीजिए कंप्यूटर. Is this clear till now? Till this point, anyone has any questions, any queries? Is it clear? Clear, sir. Yes, clear. Clear, sir. Clear, sir. 3 people, Clear. 4 people, 5 people, 6. Clear. Clear. 8. So for 8 people, this is clear. So बाकी लोग? 7 people are there. Sir, you are the 9th one. Total 9 are there. 8 have said yes. 9 people. Where total 9? एक दूसरा भी टैब है. The totals are 14. Yeah, total of 14. Yeah. You're not sure how you got 9, so that is why. ऐसे तो फिर मेरे को ही क्लियर नहीं हुआ अगर आपका, if your logic works. Right, so I would assume then it's clear for everyone, right? सर ये जो प्रोफाइल्स और ये सब कुछ आपने जो बताया था, ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया. ये बाद में वंस जब आएगा बहुत बाद डिटेल. में प्रोफाइल के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आई विल टेल यू समथिंग. प्रोफाइल, परमिशन सेट, ये जो एक्सेस कैसे कंट्रोल करना है, राइट? This is where the loopholes are. This is where mistakes also happen. This is where interview questions also come. ओके. तो सर पता नहीं है ना परमिशन सेट वगैरह, तो वो नहीं, this all thing we will have to cover in a lot of details. आपका ऐप का परमिशन, ऑब्जेक्ट का परमिशन, व्यू का परमिशन. What you can do is आप ऑब्जेक्ट का परमिशन दे सकते हो एम्प्लॉय का, लेकिन आप एम्प्लॉय आईडी का फील्ड हाइड कर दोगे किसी से, ठीक है? एचआर के अलावा सैलरी का फील्ड दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को दिखना चाहिए नहीं. फिर कुछ लोगों के लिए आपको सैलरी का हाइड करना पड़ेगा, ओके. राइट? किसी और को आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दिखना चाहिए, मे बी कुछ डिपार्टमेंट को दिखना चाहिए, कुछ डिपार्टमेंट को नहीं दिखना चाहिए, तो वो नहीं दिखेगा. आपके टीममेट्स को आपका सैलरी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आपके मैनेजर को दिखना चाहिए, लेकिन आपका मैनेजर एचआर में नहीं है, तो उसको आप कैसे देंगे? ओके, राइट? एचआर को चलो हमने बोला एचआर का अलग प्रोफाइल बनाएंगे, एचआर को परमिशन दे दिया, लेकिन आपके मैनेजर को तो आपका सैलरी दिखना चाहिए, राइट. लेकिन वो तो एचआर है नहीं, उसको कैसे दिखाएंगे? सो वी नीड वन स्पेसिफिक वे जहां पे खाली एक ही जन को एक्सेस दे सके. हाउ टू डू दैट?
That is where permission sets come into picture, right? And ये सोचो आप खाली एक बाकी सब दिख रहा है इसको, उसको टैब दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, रिकॉर्ड दिख रहा है, बस एक फील्ड नहीं दिख रही, राइट? राइट राइट सर। फिर किसी एक आदमी के लिए हम सारी फील्ड्स रीड ओनली कर देंगे। एक टीम के लिए ये 3 फील्ड एडिट कर सकता है, एक टीम के लिए ये 4 फील्ड एडिट कर सकता है। ओके ओके, एंड आई विल टेल यू दिस, द लाइक कितना ग्रैनुअल जा सकता है। पिक लिस्ट में आप हमने क्या देखा था, ऑप्शन में आप क्या बोल रहे थे? सपोज 4-5 ऑप्शन है, उसमें से कोई सिलेक्ट करना है, राइट? राइट लेट्स से मैं कुछ लोगों को वो 4-5 में से भी खाली 2-3 दिखाऊंगा, और दूसरे लोगों को कोई और 2 दिखाऊंगा, और एक डिपार्टमेंट को खाली एक ही फील्ड दिखाऊंगा, एक ही वैल्यू सेम फील्ड के अंदर, सेम ड्रॉप डाउन में। किसी को कुछ और दिखेगा, किसी को कुछ और दिखेगा, किसी को कुछ भी नहीं दिखेगा, किसी को फील्ड ही नहीं दिखेगी, राइट? So there are a lot of configuration. You have to think this is a tool which is made for industries to work. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का इम्प्लीमेंटेशन सेल्सफोर्स पे चलता है, राइट? तो राइट कितने सिनेरियोस हैंडल करने के लिए कितना स्कोप रहा होगा, एंड ये आउट ऑफ द बॉक्स है, यहाँ पे कोडिंग भी नहीं करनी है। देयर इज अ राइट रीजन व्हाई इट इज सो पॉपुलर। राइट राइट राइट, एनीवन एल्स, एनी क्वेरीज, और आर वी क्लियर विद जो आपने आज तक किया? हेलो यस, सर, एज ए एडमिन, जो भी एडमिन परमिशन सेट करता है या कुछ मॉडिफाई करता है, तो उसको इसका कुछ मतलब रिकॉर्ड रखना पड़ता है? ये मॉडिफिकेशन करने का क्या क्या मॉडिफाई किया है? जी सर, मॉडिफिकेशन या फिर परमिशन सेट का। हाँ, ऑब्वियसली, एंड इट इज नॉट जस्ट रिकॉर्ड रखना पड़ता है। सी द थिंग इज, आप डायरेक्टली नहीं करते हो कुछ, जो आपका कस्टमर जो यूज कर रहा है वो होता है समथिंग कॉल्ड अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो उसके मल्टीपल कॉपीज बने होते हैं जहां पे आपको डेवलपमेंट और टेस्टिंग करनी होती है। पहले आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में करोगे, फिर उसको टेस्टिंग एनवायरनमेंट में भेज के टेस्ट करोगे, फिर टेस्टिंग क्लियर होने के बाद प्रोडक्शन में भेजोगे, तब जाके एक्चुअल कस्टमर को वो चेंज दिखेगा। ओके, ओके सर। फाइन। सो आज हमने जो किया, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी So let's do one thing. I'll share you an exercise. Okay. And I want you guys to do this exercise for the employee object. Now this exercise जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर you will see first two you don't need to create, क्योंकि employee name actually you need to create. I have already created, which is the employee name and the employee ID. Okay. तो आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, in your case you have to make sure कि ऑब्जेक्ट का नाम इज अ टेक्स्ट एंड इट इज एम्प्लॉय नेम। फिर ये फुल नेम फील्ड अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड एम्प्लॉय आईडी आप ऑटो नंबर बनाएंगे, विच शुड बी, इफ यू वांट यू कैन कीप दिस एज ईएमपी और समथिंग जैसे एक्सरसाइज में, या जस्ट वन ऑफ ब्लैंक रख सकते हैं, शुड नॉट बी एन इशू। ओके, ओके, आई वुड सजेस्ट आप उसको ऐड कर दीजिए कि आप उसको ईएमपी करके ही कीजिए। आई विल आल्सो मॉडिफाई इन माय ऑर्ग so that every one of us has the same thing. So for today, see, yesterday people did not try with the standard object. It is fine. आप नहीं मिल पाया, समझ नहीं आया, whatever was the issue, right? But ये जो exercise है, ये आपको आज करना ही पड़ेगा, because if you don't do today, the only issue is then कल जो exercise करेंगे, we will also do on the same object.
अब हम इसी ऑब्जेक्ट में चीजें ऐड करते जाएंगे. Okay, so then who will be the one who is in a problem? It will be you. सर ये जो 6 1 2 3 4 5 7 सर टोटल 8 फील्ड्स बनानी है इसमें जैसे आपने दिखाया हुआ है. यहाँ पे आपको बनानी है 8 फील्ड. कितनी है? कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक नीचे है ना हाँ जी. 9. years of service. फॉर्मूला फील्ड आप बनाइए. वैलिडेशन रूल यू डोंट नीड टू वरी. ओके, वैलिडेशन रूल व्हेन विल कवर तब हम क्रिएट करेंगे. You leave that. Okay, if today we had more time, I would have covered validation rule also today, but that's fine. Validation rule when we'll cover, we'll be creating this anyway. सर Okay, और इसका but all टैब this, टैब कौन सी एप्लीकेशन में डालना है इसका? okay, for testing अभी के लिए आप टेस्ट करने के लिए आप लोग सेल्स ऐप में डाल लीजिए. But tomorrow what we will do is we will create a new tab, a new application. ऐप बनाएंगे पहले हम. Okay, let's say an employee management system, and then उसके अंदर फिर हम डाल के हम अपने चेंजेस उस ऐप के अंदर करेंगे. Okay, ओके. for now जब आप लोग ये टैब बना के टेस्ट करेंगे किसी भी ऐप में डाल के देख लीजिए. It's the same thing, should not be an issue. Okay, anyone else, any queries, any doubts? सर पहले तो एम्प्लॉय एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है एंड आपकी एक्सरसाइज जो है इसमें एम्प्लॉय के अंदर सारा कुछ ना क्रिएट करना है. करेक्ट? Right. ये फील्ड्स Right, आपको sir. बनाने हैं. एंड इफ यू वांट जी. जस्ट सम मोर, तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे फील्ड हिस्ट्री बनाएंगे, सो यू शुड enabled field history for. Okay, I think these are actually crucial fields. ठीक है, एक काम कीजिए, आप सारी फील्ड्स पे फील्ड हिस्ट्री बना देना. बिकॉज ये जो ओके स्किल्स पे मत बनाना. डोंट क्रिएट ऑन स्किल्स और प्रोफाइल पिक्चर. ओके, all the other things I think is fine. Add one more, just add one more. Date of joining आपको दिख रहा है ना, right? आप एक डेट ऑफ लिविंग भी बना दो. देयर इज वन सिनेरियो आई वांट टू कवर, तो डेट ऑफ लिविंग भी बना दो. ठीक है, वी विल क्रिएट अ वैलिडेशन रूल एंड अ फॉर्मूला फील्ड फॉर दिस. तो उसके एक्सरसाइज के लिए काम आएगा. आप लोग डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ एक डेट ऑफ लिविंग का फील्ड भी बना दें, या डेट ऑफ रेजिग्नेशन, whichever sounds better to you. Last working day, like Sorry? last